इस स्टोरी में ना मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी पड़ी जो मैंने पहले कभी नहीं करी थी। जैसे कि मैं बाइक चला रही हूँ पूरी स्टोरी में। मुझे बाइक चलानी आती नहीं थी तो मुझे सीखना पड़ा। और मुझे सिर्फ आई थिंक 2 दिन थे मेरे पास सीखने के लिए। एंड मैंने सीखा भी तो मैंने एक डेजर्टेड रोड पे सीखा था। मुझे ये नहीं पता था कि जब मेरे को शूट करना है तो मुझे हाईवे पे डाल देंगे, in the middle of the highway with trucks and buses and cars and scooters. It was crazy. तो you can imagine ना, अगर आपने नया नया सीखा है कुछ भी चलाना और आपको सडनली डीप एंड में छोड़ देते हैं तो क्या फटेगी आपकी। I don't know if I can use that word but edit it, beep it out. But हाँ, तो मेरी बहुत बीप हुई बिकॉज मुझे लगा था कि चलो साइड वाइड में कहीं पे बोल देंगे चला लो। यहाँ पे तो बीच सड़क पे बोला था चलाने के लिए और आई हैड टू लुक लाइक एज इफ मैं सालों से चला रही हूँ बाइक एंड आई हैड टू लुक वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी एट ईज। बट डूड, लाइक इट वाज द मोस्ट पेट्रिफाइंग मोमेंट ऑफ माई लाइफ बिकॉज बहुत सारे शॉट्स थे जो हम ड्राइव करते हुए राइड करते हुए ले रहे थे। और द एंटायर थिंग इट वाज आल्सो मल्टी कैमरा सेटअप, तो आपको उसका भी ध्यान रखना है कि आप कैमरा में भी देख रहे हो। ये आपको यू हैव टू मेक इट लुक लाइक एज इफ इट्स वेरी नेचुरल। एंड आई रिमेंबर हम एक छोटी सी गली में भोपाल में शूट किया तो वहाँ पे बहुत छोटी छोटी गलियाँ हैं। तो एक छोटी सी गली में हम लोग शूट कर रहे थे और बहुत लोग थे वहाँ पे। अब ऑब्वियसली अगर आप भोपाल जैसे शहर में आप शूट करोगे तो बहुत सब एक्साइटेड हो जाके शूटिंग देखने आ जाते हैं। उनको नहीं पता कि कैमरा फील्ड क्या है, कैमरा क्या है। तो आई वॉज राइडिंग द बाइक और एक द ड्रोन वॉज विद मी और सडनली इन द मिडल ऑफ इट पुराने एक बुजुर्ग इंसान suddenly decided to cross and I remember the drone was right here and it would have hit him on his head and the camera would have broken, the drone would have broken and more importantly the man would have gotten injured because I would have also rammed into him. I don't know how it happened that I braked at the last minute at the right time and because मैंने ब्रेक लगाया तो ड्रोन ऑब्वियसली उन्होंने रोक दिया क्योंकि वो ड्रोन मुझे फॉलो कर रहा था। जब मैं रुकती तो ड्रोन रुकता। And luckily everything was fine. The man was fine, I was fine, the drone was fine. तो नहीं तो वो अंकल भी चले होते और मैं भी चली होती और कैमरा भी गया होता। But that happened and then I had to learn how to smoke a cigarette because I'm a non-smoker. But Kabir wanted the character to be a smoker. Again, I had to learn. I had to call up my friends who were like, "What? Why do you want to learn how to smoke? People are giving up smoking and you want to learn how to smoke." I'm like, never mind. So I had to learn that. And I also wanted to make it as authentic as possible because जब non-smokers screen पे smoke करते हैं तो पता चल जाता है कि she doesn't smoke. So I was very careful that I didn't want it to happen like that. And Kabir wanted a BD, not even a cigarette. So I had to learn how to smoke a BD. And then he's made us, क्या होता है कि I think Kabir believes in method, direction also. So there was a scene in which Abbas's character and my character, we were drinking and there's a scene that's happening. It's a really long scene. It's like a 5-page scene. And what he did, usually what happens is you probably put Coke or something like that. You don't usually have alcohol. But Kabir decided that he wanted to keep alcohol. तो हमने neat rum पिया है through all those takes and we had to do multiple takes because ये 5 scene का जो scene था वो हमने 1 take में किया है। तो you can imagine the number of retakes that must have happened. And by the end of it I was drunk, but it's one of the best scenes of the series. So the lesson to be learned is to not drink, but sometimes drinking can lead to good performances. My story is called Jalpari and I play Anjali, who is the story is based out of Bhopal. She is a doctor, a psychologist, and she has been in love with this boy since childhood, and the boy has never reciprocated those feelings to her openly. Although she kind of knows that he does have a soft corner for her, and she's waited and waited and waited, and she's reached a point where she's like, I've had enough. And बहुत फेमस कहावत है, जब खीर सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है। तो अब वो इस सिचुएशन में पहुंच गई है कि अब उसको वो टेढ़ी करनी पड़ रही है और किस तरीके से वो लड़के का पास्ट एक थोड़ा डार्क पास्ट है जो उसी के अगेंस्ट यूज़ करती है और किस तरीके से इज शी सक्सेसफुल इन गेटिंग
finding love. Do they end up together? She's genuinely in love with the boy, and वो हमेशा उसकी हेल्प करती है. He's a writer who's suffering from a writer's block. She helps him professionally. She helps him personally. But there is a dark side to her, and there's a dark side to the story.